Hello students, this is your faculty Dr. Priya Singh and today's topic is growth of homeopathic pharmacy and research. So in this topic we are going to study what are the recent advances or what are the how the homeopathic pharmacy has developed since the time of our master Dr. Hahnemann. So recent advances in homeopathic pharmacy, they can be studied under pharmaceutics, pharmacognosy, experimental pharmacology, including homeopathic pathogenetic trials, pharmaceutical analysis, and fundamental research. So these are the basic headings under which we are going to study this topic. First of all, the advances in pharmaceutics. Pharmaceutics is basically deals with the study of preparation or manufacturing of drugs. So sources, the dosage forms, everything comes under pharmaceutics. So the first point here is there has been new addition of drug sources. So while you were studying drug sources, आपको अलर सोर्स और आइसोर्स के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बताया गया होगा. So I'm going to just brief here कि होम्योपैथी के जो नॉर्मल सोर्सेज है उसमें दो न्यू सोर्सेज ड्रग सोर्सेज का एडिशन हुआ है विच आर अलर सोर्स एंड आइसोर्स. Allosodes क्या है? Allosodes are homeopathic preparations of antigens. So substances which under suitable conditions can induce the formation of antibodies. So allosodes वो sources हैं जो कि एंटीजन से बनते हैं या एंटीजन की प्रिपरेशन होम्योपैथिक प्रिपरेशंस को हम allosodes कहते हैं. एग्जाम्पल है इसके ऑप्सिनोजेंस, टॉक्सिन्स, फर्मेंट्स. और आइसोड्स हैं. आइसोड्स आर होम्योपैथिक प्रिपरेशंस prepared from plant, animal or chemical substances including drugs which have been ingested or otherwise absorbed by the body and have believed to produce a disease or disorder which interferes with homeostasis. They may also be called as detoxodes. So आइसोड्स वो होम्योपैथिक प्रिपरेशंस हैं जो कि किसी भी सोर्स से बन सकती है जो बॉडी में जाके कोई डिजीज या डिसऑर्डर ऐसी प्रोड्यूस करे जो होम्योस्टेसिस से इंटरफेयर करे. सो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करने वाला हर वो सब्सटेंस कैन बी इंक्लूडेड अंडर आइसोड्स या इनको डिटॉक्सोड्स भी कहते हैं. एज वेल एज एलोपैथिक सोर्सेज या एलोपैथिक मेडिसिन को लेके भी जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती हैं दे आल्सो कम अंडर आइसोड्स. So example of isodes can be gentamicin, furosemide, brufen. So all these come under isodes. So basically two new additions in the drug sources are there. Now coming to the pharmaceutical dosage forms, basically बहुत ज़्यादा changes तो नहीं है, but in the preparation of tablets as well as certain external applications such as ointments, there have been few changes या few advances. Like in tablets, traditionally जो tablet बनाने के लिए method use किया जाता था, that was standard compressed tablets were made, which were made by wet and dry granulation technique, and currently it is made by fluid bed spray granulation technique. It's just a method. I'm just informing you. You don't need to go much in detail about this. And initially, starch, talc, magnesium stearate, they were used as diluents and binders. And currently, carboxymethyl cellulose (CMC) is used as diluents and binders. Now, डायल्यूएंट्स एंड बाइंडर्स वो ये कि आपको टैबलेट बनाते हैं जब आप तो आपको कुछ और भी सब्सटेंस ऐड करने पड़ते हैं सो दैट इट टेक्स द शेप ऑफ अ टैबलेट. अदरवाइज पाउडर फॉर्म रहेगा, द शेप ऑफ अ टैबलेट विल नॉट कम. सो उसके लिए डायल्यूएंट्स एंड बाइंडर्स ऐड किए जाते हैं. सो इनिशियली स्टार्च, टैल्क एंड मैग्नीशियम स्टेरेट वर यूज्ड एंड currently carboxymethyl cellulose is being used in the preparation of homeopathic tablets. Now ointments में about homeopathic ointments, initially जो base use किया जाता था that was petroleum, beeswax etc. But now currently hydrophilic bases जैसे कि gels and creams, these are used as base. Now manufacturing techniques, I think all of us know about this already कि पहले when Hahnemann used to prepare medicine, he used to prepare his medicines manually, but now since we have to
prepare medicines in large quantities or so bulk quantities. So for that purpose, the many manufacturing companies have started using automatic potentizer. So handmade potentizer or hand succursor or manual succursor is good for if you are preparing medicine in small quantities or for your purpose. But in large scale preparations, now automatic potentizer is being used. So it is being used to ensure standardized potentization of higher potencies. Different manufacturing company have incorporated the use of automatic potentizer. It is an easy to operate equipment that enables to raise 900 potencies per head in one time operation. So you can see that one time operation mate can raise up to 900 potencies, which might not be possible manually. So that is why automatic potentizers have been started to use by the uh, uh, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. Along with that, mechanical triturator, जो generally आप trituration करते हो with your hand by mortar and pestle, you all know that it requires a lot of time and effort. So manually, for making bulk quantities, it is a bit difficult task. For that, mechanical triturators have been used by the companies. The method of mixing of constituents in a mechanical device or amalgamator, the older method of mixing of constituents by hand in a mortar and pestle. So जो mortar and pestle में mix करके आप triturate करते हो, the process of trituration is now performed by a mechanical device. So that is known as a mechanical triturator. Now standardizing safe lower limits for trituration. So जो trituration से medicines हम बनाते थे, initially there was no low limit or safe limit for prescription. They were prescribed in all potencies, but now there have been some limits of prescription. The limits are कि all arsenics, baryta, mercurius and plumbum group of medicines should not be prescribed below 3x. So जितने भी triturations है arsenic salt के, baryta के, mercurius के, plumbum के, they should not be prescribed below 3x. All nosodes should not be prescribed below 6x, and all snakes or vipers, spider, toad and insect poison. So basically all insect poisons or poisons, they should not be prescribed below 3x. So these are safe lower limits for trituration for prescription. Now let's move on to advances in pharmacognosy. Pharmacognosy is basically a study of drugs through its external features. So external appearances, external features के basis पे हम जब drugs को study करते हैं उसको हम pharmacognosy कहते हैं. So pharmacognosy के advances ये हैं, या pharmacognostic study को भी हमने homeopathic pharmacy में include कर लिया है. So this is also an advance. So essential pharmacognosy, microscopical examination of plant drugs. So अब हम study जब plants को हम plant drugs को basically जब हम study करते हैं, we study them under the microscope, and the microscopical study of an organized drug, either in entire or powdered form, is one of the important aspects of histological evaluation. So histological study करते हैं हम of a plant drug which can be either in the original form or in powdered form. And the arrangement of tissues in transverse and longitudinal sections and types of cells and cell contents are revealed by suitable histological study of a true drug with the aid of a microscope. So basically हम क्या study करते हैं उसमें, arrangement of tissues, cells and cell contents. So basically points जिनके basis पे हम किसी भी drug को study कर सकते हैं, plant drug को specifically study करते हैं. First is the diagnostic character of leaves. Diagnostic characters में बहुत सारे points हैं, but before moving on we should understand stoma क्या होता है. So botany में या आपने कभी अगर आपके 11th 12th के level पे अगर stoma सुना होगा while studying plants, stoma is a term, उसका plural है stomata. It is a pore found in the epidermis of leaves, stems and other organs that facilitates gas exchange. So ये जो आप pore देख रहे हो, basically ये pore like structures, इनको हम stoma या stomata कहते हैं. These are present in the plants, basically in the epidermis of leaves, stems and other organs, and they facilitate gas exchange. So basically a gas exchange में ये stomata help करते हैं. The pore is bordered by a pair of special parenchyma cells known as
guard cells that are responsible for regulating the size of stomatal opening. So ये जो पोर है इसके आसपास ये जो आप सेल्स देख रहे हो, these two cells, these are known as guard cells, and ये guard cells responsible होते हैं for opening and closing of the stoma और stomata. इसके साथ साथ जो ये cells हैं, ये green cells जो आपको dark green cells दिख रही हैं, these are your epidermal cells. So epidermal cells, guard cells and stoma. Basically इनका function क्या होता है stoma का, to facilitate gas exchange. So now, on the basis of study of the number of stoma present in a leaf per square millimeter, we can identify that particular plant. So first thing is stomatal number. Stomatal number is defined as the average number of stomata per square millimeter of epidermis of the leaf. The actual number of stomata per square millimeter may vary for the leaves of the same plant grown in different environment or under different climatic conditions. So stomatal number क्या है? It is the average number of stomata which are present per square millimeter of epidermis of leaf. So if leaf को हम leaf को लेते हैं, उसके epidermis पे हम एक square किलोमीटर, एक millimeter square को हम लेते हैं और वहाँ पे number of stomata count करते हैं. So एक average number of stomata जो उस एक मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर एरिया में प्रेजेंट है, उनको हम काउंट करते हैं, एंड दैट कैन हेल्प अस आइडेंटिफाई और दैट कैन हेल्प अस टू नो व्हाट ड्रग इट इज, व्हाट drug or what family or what actual the plant is. So for example, Dhatura stramonium का अगर आप plant study करोगे, you will see it has 87 stomatas in the upper epidermis, and if you study Hyoscyamus nagar, it has 125 stomatas in the upper epidermis of leaf. Now stomatal index. Stomatal index is the percentage which the number of stomata form to the total number of epidermal cells, each stomata being counted as one cell. Stomatal index can be calculated by using the following equation. So basically percentage of stomata जो present होता है, percentage to the total number of epidermal cells को हम stomatal index बोलते हैं. The formula is total number of stomata per unit area divided by number of stomata per unit area plus number of epidermal cells per unit area into 100. And it is basically a range, कोई ऐसा fixed value नहीं होती. So in case of Atropa belladonna, the stomatal index, it ranges from 20.2 to 23, and for Digitalis purpurea, the stomatal index ranges from 17.9 to 19.5. Next point which we can study through the study of pharmacognosy is the vein islet number. Vein islet number is the small area of green tissue surrounded by veinlets. The vein islet number is the average number of vein islets per square millimeter of a leaf surface. It is determined by counting the number of vein islets in area of 1 square millimeter of the central part of leaf between the midrib and the margin. It is constant for a given species of plant. It does not alter with the age of the plant and is independent of the size of leaf. So vein islet number can be a very helpful diagnostic character of a plant, because it is constant for any species and it does not alter with age and also with the size of the leaf. So basically vein islets, ये islets हैं जो आपको दिख रहे हैं कि ये particular square millimeter area एक plant को, एक leaf को हम लेते हैं, 1 square millimeter area उसका उठा के उसको हम उसमें count करते हैं कि vein islets कितनी है, और इनको count करके हम we can study the vein islet number. So example, Digitalis purpurea का range है 2 to 5.5 vein islets, and Cassia angustifolia has a range of 19 to 23 vein islets. Next is the vein termination number. Before we go to this, you can see over here this figure which I have taken. See, this is a 1 square millimeter of area. ठीक है, इसमें ये जो इसको कैसे काउंट किया हुआ, वेन आइलेट्स दिए हुए हैं, एंड यू कैन सी द हाउ इट इज काउंटेड 1 2 3 4 5 6 sorry 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So the number of vein islets in this particular 1 square millimeter of a leaf are 15. So this is how the vein islet or number of vein islets or vein islets number is calculated. And the vein termination number,
वेन टर्मिनेशन नंबर, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, कि जहां जहां ये वेन्स एंड हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं, उनको हम काउंट करते हैं. वेन टर्मिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ सरफेस. सेम है मिडवे बिटवीन द midrib of leaf at its margin, and a vein termination is ultimate free termination of veinlet. So ये जो आपको दिख रहा है, ये free termination of a veinlet, इसको हम काउंट करेंगे. So these are the vein termination numbers. जैसे ये फ्री टर्मिनेशन है, ये फ्री टर्मिनेशन है, ये फ्री टर्मिनेशन. सो इन ये सारे को हम काउंट करते हैं एज वेन टर्मिनेशन. एंड वेन आइलेट्स मैंने आपको बता दिया कि एक 1 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया को हम लेते हैं और उसमें जितने भी आइलेट्स दिख रहे हैं, आइलेट मतलब आइलैंड या जो बीच बीच का जो प्लेन एरिया दिख रहा है, उसको हम वेन आइलेट कहते हैं और उसको हम काउंट करते हैं. Now next important diagnostic character after the study of leaves में, जिसमें we have studied vein islet number, vein termination number, stomatas and stomatal index, is the type of stomata. कि किस टाइप का स्टोमेटा है उससे भी हम स्टडी कर सकते हैं what is the plant drug. So there are different type of stomatas and they are mainly classified based on the number and characteristics of the surrounding subsidiary cells. So जो surrounding cells हैं, subsidiary cells या epidermal cells, उनके arrangement के ऊपर ही depend करता है what is the type of stomata. So anomocytic stomata are surrounded by the epidermal cells which have fixed shape and size. The stoma appears to be embedded in epidermal cells. There is no definite number and arrangement of cells surrounding the stoma. You can see here in this photo. Anomocytic ये कि एक fixed number होता है, fixed shape होता है, and these are the side के जो epidermal cells हैं वो. ये guard cells हैं, ये स्टोमा है और ये एपिडर्मल सेल्स है. So, इनका अरेंजमेंट डिफाइन करता है कि टाइप ऑफ स्टोमाटा क्या है. दिस इज द एनोमोसाइटिक टाइप. Anisocytic type, each stoma is surrounded by unequal sized 3 subsidiary cells, among which one is distinctly smaller in size than the other two. So anisocytic में usually unequal size के 3 cells होंगे स्टोमा के आसपास, जिसमें से एक जो होगा वो हमेशा distinctly smaller in size होगा than the other two. Look here, ये एनाइसोसाइटिक टाइप है. तो जो ये तीनों सब्सिडियरी सेल्स ही होंगे इसके आसपास, एंड एक जो होगा बाकी दोनों से डिस्टिंक्टली बहुत स्मॉल होगा साइज. Next is the diacytic type. Diacytic stomata are surrounded by a pair of subsidiary cells that are perpendicular to the guard cell. So guard cells की perpendicular. See, these are the guard cells. इनके perpendicular अगर subsidiary cells present है तो वो diacytic type of stomata होगा. Parasitic stomata, the stomata are continuously surrounded by 2 subsidiaries which are arranged parallel to the stomatal core and the guard cell. So अगर guard cell और subsidiary cells अगर guard cell और stomata की parallel होंगी तो वो parasitic type होगा. अगर ये जैसे stomata है, ये stomata है, ये guard cells है, इसके parallel ये जो subsidiary cells हैं, so this is a parasitic type. And last is the graminaceous type. Each stomata possesses 2 guard cells which are shaped like dumbbells. The subsidiary cells are arranged parallel to the guard cells. The guard cells are found narrow in the middle and wider at the ends. Graminaceous type ये है जिसमें subsidiary cells जो है वो guard cells के साथ subsidiary cells guard cells के साथ dumbbell shape में होंगी. So this is the graminaceous type. Next, let's move on the trichomes. Trichomes, I hope you might have heard somewhere. Trichomes को basically हम जो hair growths होते हैं plants में उसको हम trichomes कहते हैं. Trichome is the term used to refer to tiny outgrowths from the plant epidermis. It refers to the tiny hairs that can be seen emerging from the surface of leaves and other epidermal surfaces of plants. And they can be either glandular or non-glandular. So trichome की presence की basis पे trichome glandular है, non-glandular है, या trichome का shape कैसा है, जो उसके hairs presence है वो उनका shape कैसा है, उसके basis पे भी आप किसी plant drug को identify कर सकते हो. So glandular trichomes, these type of trichomes are known to secrete various substances including water
nectar, raisins, mucilage, and terpenes, among others. Apart from the capacity to secrete, glandular trichomes can also be grouped in accordance to the number of cells. The glandular trichome can help to identify a plant drug very nicely, and they are both unicellular and multicellular glandular trichomes. They can also be uniserate or multiserate, मतलब single layer or several layers में हो सकते हैं. And the glandular trichomes include the stinging hairs and glandular hairs. So जो भी secretory जितने भी type of hairs होंगे, they will come under glandular trichomes. ये these are some shapes of a trichome: papillary, filiform, branched, stellate, filiform, branched, equisemiform, several rows of cells, then unicellular, pluricellular, peltate. So these are just few shapes of trichomes as are available on the plant surface, and you can identify the plant depending upon the type of trichome and the shape of trichome. Now the non-glandular trichomes, non-glandular trichomes also exist as either unicellular or multicellular. However, they can also exist as either branched or unbranched. And a majority of these have been shown to be branched, simple, and shaped like a star. As for the unbranched non-glandular trichomes, they can exist as uniserate, biserate, or multiserate. They also vary in shape, size, and length, and can be found in a variety of plants. So as I've already mentioned, they can be in any shape, they can be in any form. A branched हो सकते हैं, unbranched हो सकते हैं, simple हो सकते हैं, layers में हो सकते हैं, uniserate हो सकते हैं, multiserate हो सकते हैं. So any of these shapes can be there for a trichome, and by studying the shape of a trichome or by studying the type of trichome, you can very easily identify what the drug can be. For example, examples of non-glandular trichomes are Nux vomica, Cannabis indica, Lobelia inflata, and glandular trichomes. An example can be a Justicia adathoda. Now detection of steroids. So steroids का डिटेक्शन क्यों होने लगा होम्योपैथी में? बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन को जब इनिशियली हम we don't have any fixed basically we have so many sources for preparation of medicines, or we have so many drug sources. कोई एक fixed में हमारा prescription criteria नहीं है. We don't have a fixed preparation method. Every drug is prepared in a different way. The amount of alcohol to be added, so everything is there is nothing fixed for preparation of drugs in homeopathy. You all have studied all this up till now. So since we don't have any fixed science, it is all based upon experiments and observations. Many a times it has been said that homeopathic medicines, they don't usually work, and whatever effects are there, they are usually only because of the presence of steroids in these medicines. So जो भी आपको effect feel होता है after taking homeopathic medicines, ये steroids की वजह से होता है. This is what is usually preached about homeopathy by the other systems of medicine. So to prove that no, there are no steroidal effects in homeopathy, and the homeopathic medicines do not work because of steroids, इस test को किया जाने लगा to check whether steroids are present in the medicine or not, or homeopathic medicine specifically present है या नहीं है. So there are two types of methods जिससे हम test कर सकते हैं कि homeopathic medicines में steroids नहीं होते या होते हैं. So colorimetric method है, colorimetric method, जिसमें हम tetrabenzoium blue salts को use करते हैं, and the reaction depends on the reduction of tetrabenzoium blue salt to give a highly colored compound known as farmasan. Under controlled conditions, the amount of farmasan developed is proportional to the quality of steroids or any other reducing sugar present in the material being tested. So steroids are basically reducing sugar. So अगर aldehydes present हैं या जितने भी reducing sugars होती हैं वो सब present हैं अगर in any form, तो this test will come positive. Blue salt होता है, एक टेट्राजोलियम ब्लू सॉल्ट होता है, उससे हम रिएक्ट करते हैं ड्रग्स को, और अगर एक हाईली कलर्ड कंपाउंड फार्माजान बनता है, तो अगर फार्माजान बनता है, दैट मींस देयर आर स्टेरॉइड्स प्रेजेंट इन द मेडिसिन.
सो इनिशियली व्हेन दिस टेस्ट वाज बीइंग डन, कई बार ऐसा होता था कि होम्योपैथिक मेडिसिन में फार्मेजान बन जाता था. व्हाई? बिकॉज रिड्यूसिंग शुगर्स होती है होम्योपैथिक मेडिसिन में. वी ऑल नो दैट शुगर रहता है, ग्लूकोज, जो भी हम व्हीकल सोर्सेज यूज करते हैं, चाहे वो हम सुक्रोज लैक्टोज यूज कर रहे हो या हम अल्कोहल भी यूज कर रहे हैं, एंड इफ देयर इज सम अमाउंट ऑफ एल्डिहाइड प्रेजेंट इन अल्कोहल, इफ इट इज नॉट दैट प्योर अल्कोहल, देन इन दैट केस आल्सो दिस मेथड कैन कम पॉजिटिव, which will be a false positive. So that is why colorimetric method was initially used, but this is not the correct or the most right method for detection of steroids. So the another method which is suitable for detection of steroids in homeopathic medicines is Lieberman-Bouchard test. It includes thin layer chromatography and UV absorption method. So see, all steroids, they show UV absorption between 235 to 240 nanometer in dehydrated alcohol or methanol. तो सारे स्टेरॉइड्स को अगर आप यूवी एब्जॉर्प्शन के अंडर स्टडी करोगे, दे विल बेसिकली बी कम अंडर द वेवलेंथ ऑफ 235 to 240 nanometers. Now Lieberman-Bouchard is a reagent used in a colorimetric test to detect cholesterol, which gives a deep green color. Basically कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, या स्टेरॉइड्स को टेस्ट करने के लिए भी एक रिएजेंट यूज किया जाता है, इसका नाम है Lieberman-Bouchard reagent, and it basically gives a deep green color. So जब आप इसको रिएक्ट करोगे with for study, तो सबसे पहले कलर आता है पर्पल, देन पिंक कलर, एंड देन प्रोड्यूसेस थ्रू अ लाइट ग्रीन कलर टू अ वेरी डार्क ग्रीन कलर. सो यू कैन सी हियर धीरे धीरे ये डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है. Lieberman-Bouchard, तो अगर प्रेजेंट होगा स्टेरॉइड्स तो ये कलर चेंज होगा, अगर नहीं प्रेजेंट होंगे स्टेरॉइड्स तो नहीं होगा. तो दिस इज बेसिकली अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन. Now next move on to the experimental pharmacology. Pharmacology, I hope we all know by now कि any action of drug या any action of medicines upon the human body is pharmacology. So experimental pharmacology is study of these effects of medicines through experiments. Okay, so it includes both human experiments on humans and also experiments on animals. Pharmacology is the study of drugs and their effects, we all know. Experimental pharmacology is studied through experimental use in controlled situations. Human and animal drug testing falls into the category of experimental pharmacology. So both human testing, that is drug proving, and animal drug testing, जो अगर हम किसी भी drug को या drugs को animals पे study करते हैं, for example mice, rodents and all, so that all will come under experimental pharmacology. And the basis of homeopathic medicine is experimental pharmacology only. So drug proving या homeopathic pathogenetic trials जो हमारा homeopathic का base है, that is experimental pharmacology only. So what is the application of experimental pharmacology in homeopathy? So the main aims, basically why are we doing experimental pharmacology या हम drug proving क्यों करते हैं? To study the mechanism of action of potentized homeopathic drugs in animal models. बेसिकली पोटेंटाइज मेडिसिन का इफेक्ट एनिमल्स पे क्या हो रहा है वो भी हम स्टडी करते हैं. वी स्टडी द साइट ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, किस साइट पे एक्ट कर रही है होम्योपैथिक ड्रग, वो भी हम स्टडी करते हैं. वी स्टडी द टॉक्सिसिटी ऑफ टू ड्रग्स, कि कोई ड्रग जो है वो कितना टॉक्सिक है, कितना लीथल है, क्या डोजेस हैं उसके, वो हम स्टडी कर सकते हैं. एंड टू फाइंड आउट द थेरेप्यूटिक एजेंट सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज. तो अगर बेसिकली हम किसी न्यू ड्रग को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं या उसको ह्यूमन यूज में लाना चाहते हैं, so before that we need to study that drug on animals. So these are the points basically जिनकी बेसिस पे हम animals पे drug testing करते हैं. सबसे पहले mechanism of action, then site of action, then toxicity and कि therapeutic agent है भी या नहीं है, which can be fit for use for humans. Now next moving on to the human pathogenetic trials. Drug proving में क्या changes आए हैं? I have only taught you this topic of drug proving, and I had told you at that time कि जो drug proving Hahnemann के time पे की जाती थी, that is very different from what we are doing right now. So the right now what we are doing is not known as drug proving. We know it as human pathogenetic trials or HPT. So here I want to make you understand कि basic differences क्या है पहले और अब में. पहले ये था कि कंट्रोल ग्रुप्स नहीं थे. हैनेमन के टाइम पे ही नेवर यूज्ड टू डिवाइड
his एक्सपेरिमेंट इनटू टू ग्रुप्स की एक ग्रुप को हम दवा देंगे, एक ग्रुप को प्लेसिबो दें, या एक ग्रुप को कुछ भी ना दें और हम स्टडी करें कि इफेक्ट हो रहा है या नहीं. इट वाज नॉट लाइक दिस. बट नाउ टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग, सपोज यू हैव टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कैनबिस इंडिका, सो नाउ से 3C या 30C. तो एक्सपेरिमेंट पैथोजेनेटिक ट्रायल ऐसे होता है कि द सपोज यू वांट टू स्टडी दैट ड्रग, सो देयर आर 30 कैंडिडेट्स को अगर आपने लिया तो हम सिर्फ 15 को कैनबिस देंगे और 15 को हम कैनबिस ना देके प्लेसिबो दे सकते हैं या कुछ भी नहीं दे सकते. सो ये जो कंपैरेटिव ग्रुप होगा या प्लेसिबो ग्रुप होगा जिसको हमने मेडिसिन नहीं दिया है, समथिंग नॉन मेडिकेटेड दिया है, दैट विल बी द कंट्रोल ग्रुप, व्हिच वाज दिस थिंग वाज नॉट फॉलोड एट हैनेमन्स टाइम. सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते थे कि जो मेडिसिन इफेक्ट्स थे, जो मतलब एकदम एग्जैक्ट जेन्युइन सिम्टम्स नहीं मिलते थे, कई बार ओवर एस्टिमेशन होता था. सिमिलरली हैनेमन यूज्ड टू give his medicines to his well-known friends, and those his known friends were provers. But now we don't do it this way. We try to prove the medicine on non-servient provers, and there is also placebo comparison always. कि हम ऐसे known लोगों को नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या नॉन लोगों को ही हम एज प्रूवर्स लेते हैं. हम एक जनरल कैटेगरी, जनरलाइज्ड वे में ही प्रूवर्स लेते हैं. ऑल दोज हु आर विलिंग टू गो फॉर अ प्रूविंग, whether they are from medical background or non-medical background, they are literate or illiterate, but they should not be well-known friends. उससे क्या होता था, when Hahnemann used to take his friends as provers, then also their जो actual symptoms थे वो कई बार नहीं भी होते थे, because they might also try to please the master prover. कई बार नहीं भी है symptom, but फिर भी कुछ कुछ वेग बता देते थे provers. एंड हैनमैन के टाइम पे द प्रूवर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मेडिसिन. जो भी मेडिसिन प्रूवर्स को प्रूव करने के लिए दी जाती थी, उनको पता होता था कि उनको कौन सी मेडिसिन दी जा रही है. बट नाउ व्हेन वी डू HPT, वी डू नॉट इन्फॉर्म द प्रूवर अबाउट द टाइप ऑफ मेडिसिन. वी डोंट इन्फॉर्म हिम कि आप मेडिसिन ग्रुप पे हो कि प्लेसिबो ग्रुप पे हो, और अगर मेडिसिन ग्रुप में हो तो कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हम प्रूवर्स को नहीं देते. Now regarding recording of symptoms, Hahnemann के टाइम पे the prover used to record his own symptoms. तो कई बार मेडिसिन सिम्टम्स और नेचुरली अकरिंग सिम्टम्स को मिला के वो लिख देता था पेशेंट प्रूवर. सो उतनी जेन्युइन या उतने करेक्ट सिम्टम्स नहीं होते थे. बट व्हाट वी डू नाउ इज वी कीप अ प्री ऑब्जर्वेशन पीरियड एंड देन वी हैव अ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया कि हम किस बेसिस पे पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे. सो रिकॉर्डिंग भी डिफरेंट है पहले से. अब एब्सेंस ऑफ मास्किंग प्रूवर्स एंड सुपरवाइजर्स. पहले ऐसा कोई मास्किंग नहीं होती थी. मतलब मास्किंग मतलब कि किसको क्या देना है, किसको प्लेसिबो ग्रुप में डालना है, किसको मेडिसिन ग्रुप में डालना है, कौन मास्टर प्रूफ, मतलब जो एक लेवल से डिफाइंड प्रूविंग के ऐसा कुछ नहीं था. हैनेमन यूज्ड टू जस्ट गिव मेडिसिन्स टू हिज फ्रेंड्स एंड नोन पीपल, एंड दे यूज्ड टू ईट दैट मेडिसिन एंड दे यूज्ड टू राइट द सिम्पटम्स. बट अभी जो होता है, जो HPT करती है, में हम डबल मास्कर्स और सुपरवाइजर्स रखते हैं कि एक प्रूविंग मास्टर होगा, उसके अंदर एक सुपरवाइजर होगा, उसके अंदर प्रूवर्स होंगे जो 2 कैटेगरी में होंगे, एक प्लेसिबो ग्रुप होगा, एक कंट्रोल ग्रुप होगा. और जो ईच लेवल पे अदर देन द प्रूवर मास्टर, सुपरवाइजर को भी कई बार नहीं पता होता है कि कौन किस ग्रुप में गया है, किसको क्या मेडिसिन मिली है या प्लेसिबो मिला है. सो दिस इज मास्किंग. बेसिकली हम डबल मास्किंग करते हैं, कि जो मास्किंग या ब्लाइंडिंग भी कहते हैं इसको, कि किसी को भी नहीं पता है कि क्या मेडिसिन किसको दी गई. सो दिस इज आल्सो नोन एज ब्लाइंडिंग और मास्किंग. क्लोज सुपरविजन एंड डेली रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स. सो कई बार बहुत ज्यादा हैनमन के टाइम पे अपने हिसाब से ही पेशेंट प्रूवर्स जो थे वो सिम्टम्स रिकॉर्ड कर लेते थे. ऐसा कोई बहुत सुपरविजन नहीं होता था. बट अब देयर इज मॉडरेट सुपरविजन एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आर देयर व्हिच नीड टू बी फॉलोड. And there was no as such fixed definition of healthy provers. पहले ऐसा कुछ नहीं था कि पहले पेशेंट का हम सारे टेस्ट करवाते थे,
और उसके बाद उसको हम प्रूवर एज अ प्रूवर इंक्लूड करते थे, ऐसा कुछ रहता. Hahnemann used to give medicines randomly to his friends and relatives. So because of that also कई बार पेशेंट के पर्सन या प्रूवर के अपने सिकनेस के सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम्स वो कंबाइंड होके भी कई बार प्रूविंग में आए थे. So to avoid that, what we do in HPT now is we first before including a person into proving, we need to first make sure कि he should be a apparently healthy person. So उसके सारे हम टेस्ट करवाते हैं, सारे लैब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, after which if the prover comes out to be apparently healthy, then only he is included, otherwise he is not included in the proving. तो एक डेफिनेट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि किनको हमको स्टडी में इंक्लूड करना है, किनको हमें स्टडी में इंक्लूड नहीं करना है, उसके बेसिस पे एक डेफिनेट क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम लोगों को प्रूविंग में इन्वॉल्व करते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन प्रूविंग सिंस द टाइम ऑफ हैनेमन, बिकॉज उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते थे वो उतने जेन्युइन या उतने करेक्ट नहीं होते थे, थोड़ा बायसनेस होता था एट टाइम ऑफ डॉक्टर हैनेमन. So this is also a major advantage or major growth of homeopathic pharmacy. Now advances in pharmaceutical analysis. Pharmaceutical analysis का मतलब है कि जब हम ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं. So I think I should stop here and I will try and very soon to continue this topic again, because we have further more slides and it will be a lengthy, a bit lengthy session. So I will stop here and I will continue in my next lecture. Thank you.